Joy Jagannath. Good morning, students. This is PN sir. Again, this is PN sir, and you are watching PN's Biology. Thank you, students. आमे ए जो लेक्चर रे पढ़िबा रिप्रोडक्शन कौन पढ़िबा आ पूर्व पढ़ी लेक्चर 4 पढ़ी सारी दिस लेक्चर 5 तो आ पूर्व जो मैंने पढ़ी नथिए से पूर्व लेक्चर गुड़ा देखी नेबे से देखिक जानीपारे आज तो स्पेशल एडवाइस फॉर 1 minute advice 1 minute advice is the most important and valuable advice of your life. Whatever thing you are getting from the market, that is by a rule called as 80-20 rule. Suppose तुम्हें गोटे क्वेश्चन आंसर को पढ़ुच कौन से गोटे पिलार क्वेश्चन आंसर एकाथरे मन रोचे कौन से गोटे पिलार एकाथरे मन रोनी से जार मन रोन जो पिलाटी से पिलाटी कहूँ जार मन रोचे से पिलाटी जो भल पिला ता माने से ताको तारीफ कर भल पिला नो मु आ प्रीवियस वीडियो भी कही ब्रेन इज इक्वाल टू ऑल मेमोरी कार्ड इज इक्वाल जी जेमिति रेकर्डिंग करे सेम तार बाहर समस्त सामान ताले केमिति कम बेसी मार्क रोचे केमिति होची जा कंसंट्रेशन आ जो मानकर मोर एडवाइस है जो मानकर कम मन रोची 80-20 माने थरे पढ़िले तुम मानकर 20% मन रहिबो थरे पढ़िले केते परसेंट मन रहिबो 20% निश्चिंत तुम मन रहिबो जो पिलार मन रोनी से जब 5 थर पढ़ीदेव ताले कौन हम 100% सिंपल मेक 5 times एंड गेट 100% रिमेम्बरांस ओके जदि 100% मन रखा चाहूँ 5 थर पढ़ी नियो कौन से गोटे क्वेश्चन 5 थर पढ़ी नियो इक्वाल हो समस्त दिमाग रे जो मैंने चालाक पछ कि भावुच मोर टे कम मन रोची भी 100% मन रही पार बाय दिस प्रोसेस ओके 5 times 100% right this is special little advice for you okay start कर let us start the lecture 5 of reproduction कौन आम पढ़ते रिप्रोडक्शन विषय सब तो आगुरी पढ़ी सारी बहुत पट आसीगला आम आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन ये लेक्चर आम 3टा पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट and fertilization and their fusion to form a zygote, right? The process by which the population machine is going on, that means the human race is going on. जो process रे मनीषर इंडिया आसी पहुँची फर्स्ट नंबर 1 country of the world, that process that is due to only for population and that is due to fertilization. That is due to fertilization. 2 rates are there. One is mortality and another is fertility, mortality and fertility. So the birth rate and the death rate, when the birth rate is more than that of the death rate, the population will increase. तामाने जेतो बड़े मरिबा लोकों संख्या ठारू जन्म यदि अधिका होतिबे सेठी पॉपुलेशन ग्रोथ अधिका हो जाए इंडिया रे से गोटा कहूँ इंडिया रे बहुत बार्थ रेटा अच्छी जन्म बहुत हो से तार पॉपुलेशन बहुत शीघ्र ग्रो करीगला ओके दिस इज फर्टिलाइजेशन सो लेट अस नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम दैट इज फीमेल गैमेट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम लेट अस नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग the ovum is produced by the ovary. In case of human being, the ovum is produced by the ovary. Ovary is producing the ovum of human being is having a little amount of yolk. Yolk जानिଛ yolk कहले अंडार गोटे yolk थाए केसर से yolk बहुत कम अच्छी बहुत कम yolk अनुसार एग रो नामकरण कराई थाए कम अच्छी बिली ह्यूमन एग टाउ कहते आलेसिथल एग आलेसिथल ALECITHAL आलेसिथल ALECITHAL आलेसिथल एग due to minimum amount of yolk present inside the human ovum okay but in case of other animals much more amount of yolk is present that is something different types of eggs are present also but in case of human being especially alecithal egg से एग्र स्ट्रक्चर जे देखा एग्र केमिति कौन है ना लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फास्ट डायग्राम टाक आगे ड्रॉ करवा तापर डायग्राम देखिले यू कैन बेटर नो इट इज 2 mark क्वेश्चन very simple and 2 to 2.5 nowadays it is getting 2.5 marks so structure of ovum
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो मुझे ड्र करुच्ची जस्ट लुक एट माय हैंड हाउ आई एम ड्रॉइंग द फिगर से मो हैंड टाक ड्र कले यू कैन इजिली ड्र इट मो साथी भी तुम ड्र कर मु भी ड्र करुँची टाइम नौ ड्र करने को तुम मैंने से टाइम ड्र करने चेष्टा कर इट विल बी ऑटोमेटिकली इट विल बी यू कैन डू इट you can do it I am also a human being so whenever I am doing this you can do it no doubt these are the nucleus a layer of epithelial cells which are emerging out of the ovum at the outer side. So just below to it another layer is present, just below to it another layer is also present, then the third layer is also present. Inside the third layer the nucleus is present. This is animal pole. This is in another pen I am writing for a betterment. Animal pole and this is vegetal pole. Usually, but in case of human being, due to a little amount of yolk, so we shouldn't write this pole. आमर लिखा दरकार नहीं बारंबार कहूँ देखा दरकार नहीं कहीं ना लिटिल अमाउंट ऑफ योग अच्छी जो अंडारे भितर केशटा जो पड़ता है एनिमल पोल ता अपोजिट साइडटा वेजिटल पोल राइट सो ये ना बोली लिखा जाए किंतु मु तुम मानकर बेटरमेंट पे एनिमल पोल और वेजिटल पोल लिखी ओके देख आ भीतर गोटे प्रकार साइटोप्लाज्म अच्छी ता ना हूँ ऊप्लाज्म ओके लेट अस नेमिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ दिस is called as corona radiata. Corona radiata, okay, the first layer which is made up of a single layer of epithelial cells. Each and every cell has got their respective nucleus. जो सेल गुड़ाक निजर न्यूक्लियस गोटे अच्छी एवं सेटा गोटे लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल तैयारी होती जस्ट बिलो टू इट कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा ZONA पेल्यूसिडा PELLEUCIDA जोना पेल्यूसिडा it is another layer insulating layer present in just below to the corona radiata. The most inner membrane is vitelline membrane. Vitelline and the cytoplasm present inside the ovum called as ooplasm. Okay, and there is a nucleus present inside the ovum. There is a nucleus present here. Nucleus, haploid nucleus, big nucleus is present. Big nucleus and haploid. Haploid means n number of chromosome ता भीतर अच्छी आधा क्रोमोजोम अच्छी आम देह केतरा क्रोमोजोम थाए 46 क्रोमोजोम 2n ताले n केते हला 23. So 23 or n number of chromosomes present in the nucleus. This is nucleus, right? So this is all about the structure of ovum, human ovum. That is structure of ovum likhichi bracket. We are reading especially about the human structure of human ovum, right? Right bachcho, right? You are very smart. Take the snaps and you can read it thereafter. Screenshot is very essential. Screenshot is very essential whenever you are reading. जितने पढ़ुच स्क्रीनशॉट गुड़ा नहीं जाई परिबो एवं वीडियोटा बारंबार देखिक स्क्रीनशॉट भी नहीं जाई परिबो तापर भी वीडियोटा देखिक रिपीट करके देखिक ताको लिखि परिबो नोट गुड़ा तुम करि परिबो नोटा को भी टेलीग्राम चैनल भी पाई परिबो बहुत प्रकार सहायता करिया को चाहूची ओके दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ovum okay thereafter we will switch over to human sperm. What is human sperm? Human sperm is the male gamete.
male gamete, right? The male gamete, name of the male gamete is sperm. So the human sperm, structure of ovum, structure of sperm, right? Structure of sperm. Let's draw the diagram first. As I am drawing the diagram here at neck region, two different types of centrioles are present, and towards the end ring centriole is present. And in between the axial filament is present. The axial filament is binded by sheath fibers or tail fibers or tail sheath, whatever you may say. Okay. Axial filament. Spiral mitochondria. Inside this head, there is a big nucleus present. Let us know, this is called as head. This is neck. This is middle piece. This is tail. Let us know what are the different structures. Naming.
here. The acrosome, ACROSOME, plasma membrane. This is cytoplasm. This is nucleus. This is proximal centriole. This is distal centriole. This is spiral mitochondria. This is axial filament. This is tail sheath, tail fiber. This is the very cute structure of human sperm. It looks like the tadpole larva. Tadpole or larva ଜାଣିଥିବ ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କୁହାଯାଏ tadpole larva. पूरा ମାଛ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଅଛି ସେ ସେଥିରେ ପହଁରେ ଇଏ ବି ଏଥିରେ ପହଁରେ ଆର ପହଁରିବାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲ୍ୟାସିସ୍. What this is called as? The movement of sperm, locomotion of sperm is called as lasses by the help of the tail. Acha, one after another we have to know. A head. First of all, we should know head. Head is containing acrosome, a tip called as acrosome. Inside the acrosome, there is a little structure I have drawn. It draw करिछि सेटा देखो गोल्गी बॉडी अछि. Acrosome ऊपर गोटे गोल्गी बॉडी अछि. से गोल्गी बॉडीटा कोन करे गोटे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम गोटे प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन टू द ओवम जो स्ट्रक्चर करथिल ना से स्ट्रक्चर भीतर पसिला बेल को ये एटी ए एंजाइमटा हेल्प करे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के रखिछि ना acrosome रखिछि. ओके सो acrosome परे यदि हम तळ को आसीबा देखिबा कोन द inside the head there is a big nucleus present which is controlling total sperm cell and it is also N. Haploid number of chromosomes are present also. That means 23 number of chromosomes present. 23 टा क्रोमोजोम आ भीतर अछि राइट. ता भीतर नेक कोस नेक हेड गला नेक रे कोन होचे नेक रे देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ centrioles present. One is proximal, another is distal. Proximal centriole कोन ना आगरे जो centriole अछि proximal centriole और distal centriole दुईटा डिफरेंस का अछि सेटा बहुत भलो बार तो मन रखिया दरकार. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो गुटा अछि से कोन जे स्पिंडल फाइबर सब तयारी कर छै. स्पिंडल फाइबर जानछो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर तयारी हुए से स्पिंडल फाइबर को तयारी कर छै प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल राइट. ये डिस्टल सेंट्रियोल ताले कोन करछन्ती एमान गोटे फिलामेंट तयारी करछन्ती एक्सियल फिलामेंट. ए फिलामेंट को तयारी करछन्ती एक्सियल फिलामेंट मिडिल पीस दे कि टेल भीतर पसी छी. से एक्सियल फिलामेंट टेल भीतर पशिला बेल को कौन हो टेलटा टाण हो जाऊँ राइट. मुझे तुमको कहे वेरी फनी क्वेश्चन तुम जो पानी दौच जो पाइप्रे पानी दौच लंबा लंबा पाइप सब अच्छी पानी दौच गछ मान पड़िया पानी दि जाऊँगी से गछ को मुझे कहबी 10 मीटर सीधा से पाइपटा को धरवा को सीधा करी कैन यू नो यू कैन डू इट आई नो. गोटे पाइपटा को केमी 10 मीटर आम सीधा कर धरवा बहुत डिफिकल्ट ना. एक्जाक्टली सेम सब पिला माने भावती किंतु इट इज वेरी सिंपल. ता भीतर गोटे बाड़ीटे पसई दियो ता भीतर गोटे तारटे सीधा पसई दियो इट विल बी ओके. दैट जो बाड़ी कि तार जो कहले टाण ये एक्सियल फिलामेंट ये लांगुड़ भीतर थिबा हेतु से लांगुड़ा को पहरी हल पारे हलैले कहते ल्यासिस हलैला द्वारा से आगो को पहरिकी जापर. ओके वेरी सिंपल मन रहा. अच्छा
बर्तमान मिडिल पीस की जावा मिडिल पीस रे कौन अच्छी ना एक्सियल फिलामेंट तो रन करुच्ची एटू लास्ट पर्यंत रन करुच्ची ता मझिरे मिडिल पीस इज कॉल्ड एज पावर हाउस पावर हाउस और पावर प्लांट कौन कहे पावर हाउस और पावर प्लांट पावर व्हाट इज पावर प्लांट कहले कौन ना पावर प्लांट कहले ता भितर पूरा एनर्जी भरपूर परिमाण अच्छी एनर्जी से समस्त को सप्लाय करुँच सब सब एक्टिविटीज को कौटी अच्छी क्या द्वारा ना जो स्पाइराल माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी स्पाइराल माइटोकॉन्ड्रिया भितर एटीपी भरपूर परिमाण अच्छी सी सप्लाय करुँ ना डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सप्लाय करुँच राइट तापर एक्सियल फिलामेंटर काम कही सारी लास्ट देख रिंग सेंट्रियोल दुटा अच्छी रिंग सेंट्रियोल कौन अच्छी साइटोप्लाज्म गुड़ा को डिविजन कर साहय कर फांका जगह मानक मिडिल पीस जो फांका जगह रही ये जगह मानक सब साइटोप्लाज्म अच्छी भरी रही ये साइटोप्लाज्म कौन कहुए मंचिटा व्हाट दैट जो साइटोप्लाज्म जो मिडिल पीस रहा मिडिल पीस साइटोप्लाज्म को कहते मंचिटा MANCHETTA साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट द मिडिल पीस कॉल एज मंचिटा राइट मन रखिले बहुत भल एंट्रांस पे बहुत हेल्प करिवो ये गोटे वर्डटे देन विल गो टू द लास्ट पीस दैट इज टेल इज a long thread like structure by the help of which the sperm cell can move from one place to another place टेल द्वारा स्पर्म टा पहरी जाए से पहराटा को कहते लैसिस ओके दैट्स फाइन दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेल गैमेट दैट इज स्पर्म ओके तापर कौन पढ़ा आम ना फर्टिलाइजेशन सिंपल द थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन it is a process of fusion of male and female gamete to produce the zygote very simple male gamete sperm gamete ovum एथरे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एथरे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये दीटा को मिसी गले भी एक zygote this process is called as fertilization वेरी गुड तुम शुणी थी एक 1 + 1 = 2 ऑलवेज इन मैथमेटिक्स एंड जहाँ भी पचार कह 1 + x = 2 वेरी गुड बट हियर इन बायोलॉजी यू आर गेटिंग प्रूफ दैट 1 + 1 = 1 वेरी गुड हियर हाउ 1 हियर 1 अनदर 1 देन मिसिक से भी 1 कर 1 + 1 = 1 मेल प्लस फीमेल = 1 राइट इन बायोलॉजिकल स्टडी 1 + 1 = 1 हियर ओके सो ये जो प्रोसेस कहते जो प्रोसेसर से मिसुंट दीटाक मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन कर प्रोसेसटा फर्टिलाइजेशन कहते से प्रोसेसटा देखी ना कौन कौन स्टेप अच्छी फर्टिलाइजेशन डायग्राम गुड़ाक देखने आम इजिली जापर डायग्राम फर्टिलाइजेशन देखा स्टेप्स रे एक्टिवेशन ऑफ द एग अंडर रे बीट वन कौन कर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग मूवमेंट ऑफ स्पर्म मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट ऑफ स्पर्म नंबर 1 मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग penetration of sperm
into the ovum. Right? Penetration of sperm into the ovum. ये जो गोटे रहा आ अंडर ए रे आसुची दुईटा तीनटा पॉइंट आसुची ए बी सी कौन ना एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म activation of the egg after 1 then point 2 is coming. Point 2 is coming, that is amphimixis. Amphimixis, right? So thereafter significance हम पढ़िबा एतिक प्रोसेस होची एतिक activation of ovum, then activation of sperm, movement of sperm, then penetration of sperm into the ovum with activation of sperm and activation of egg and insemination, right? So these steps we have to come across the steps, right? अच्छा मत कह फर्टिलाइजेशन जो हुए ओविडक्ट भितर हुए फालोपियन ट्यूब और ओविडक्ट भितर हुए जो मैंने जान से माने पूर्व क्लास को पलैज मो लेक्चर 3 रे मुझे तेणु सेठी फर्टिलाइजेशन कौट हुए ना फालोपियन ट्यूब और ओविडक्ट भितर हुए ओविडक्टर मिडिल प्लेस गोटे आम्पुला नामक गोटे प्लेस अच्छी ओविडक्ट गोटे 12 सेंटीमीटर लंबा अच्छी मझे गोटे आम्पुला अच्छी बल्जिंग एरिया ड्रपर पछपट भली से आम्पुला भितर सब बेले फर्टिलाइजेशन हुए, राइट? फर्टिलाइजेशन ओनली ऑकर्स इनसाइड द आम्पुला, राइट? Let us draw the diagram. How the diagram looks like. Let us draw. Here, egg is there, egg nucleus. The sperms are running towards the second step. The sperms reaches the egg can produce the egg water. When the sperm will reach this, so third stage is the sperm will enter into it. The nucleus is there, still there, and forming a fertilization membrane. The nucleus is still there. Thereafter, what is happening? The sperm is covering a path, changing the path towards the ovum. This is path of copulation, penetration,
right? Path of penetration, then path of copulation. At last, amphimixis. What this is called as? Amphimixis. These are the structure of the fertilization. Very simple. One after another, हमें बुझी बुझी चलिबा. So, activation of the egg. Fertilization होची inside the ampulla. Inside the ampulla, already I have told. Inside the ampulla, the fertilization done.
Okay, and insemination means enter of semen to the cell, insemination. So this was all about the fertilization in case of human being. So आम पढ़िले कौन टुडे आम कवर कले स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, देन फर्टिलाइजेशन, तीनटा कवर कले जो तीनटा क्लियर कट जदि स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जदि किसी डाउट थी यू कैन राइट द कमेंट टू मी, आई विल आंसर यू देयर आफ्टर जदि नोट तुम पाइबा चाहूच ताले डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई तुम मो टेलीग्राम चैनल रू नोट गुड़ा पाइपर भल से नोट करी तुम तुम बेटरमेंट पे यूज कर केमिति ना समस्ते भल करि बोले एग्जाम रे भल करि बोले मोर आशा केमिति भल करिवो टिप्स देछि फास्ट मिनिट रो टिप्स मन पड़ी के माने मन रखिछ रीड 5 times memorize 100%, read 5 times memorize 100% and you can get 100% mark in your exam. That is my slogan. Jai Jagannath. Meet you in the next class. Thank you.